पहले लेंडिंग सिर्फ सेलेक्ट बिजनेस हाउसेस को और कुछ ही लोगों को होती थी। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद लेंडिंग और बैंकिंग का जो काम है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा, और इसीलिए एक जमाने में आरबीआई कहता था कि 1947 में के बाद, आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज उसी आरबीआई को सरकार के दबाव में अपने रिसर्चर की रिपोर्ट को से किनारा करना पड़ रहा है। एक और बात, और ये अंतिम बात है जो हम कहना चाहते हैं, एक ये मिथ फैलाया जाता है, सरकार के कुछ इकोनॉमिस्ट बैठ जाएंगे, अधकचरे ज्ञान वाले प्रवक्ता आ जाएंगे, मंत्रियों की तो क्या ही बात की जाए, जो कहेंगे कि भाई इतना पैसा डालना पड़ता है, टैक्स पेयर्स मनी सरकारी बैंकों में। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, और ये रिपोर्ट कहती है कि जो पैसा सरकार सरकारी बैंकों के कैपिटल इन्फ्यूजन में डालती है, सरकारी बैंकों ने पिछले कई सालों में, पिछले 14 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका 4 गुना दिया है। तो जो टैक्स पेयर्स मनी के नाम से एक बबल फैलाया जाता है, उसको बर्स्ट करने का काम भी ये रिपोर्ट कर रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो 4 गुना होता है सरकार ने जो पैसा डाला है उसके। तो टैक्स पेयर्स मनी इज एक्चुअली बीइंग पुट टू गुड यूज, लेकिन जो एनपीए राइट ऑफ किए जा रहे हैं और उसके बारे में जो एक मिथक फैलाया जाता है, वहां पर टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। हमारी सरकार से 3 बड़ी डिमांड है, और इस मंच से ये डिमांड करते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि बिना विलंब किए, क्योंकि कभी सरकार कहती है 27 से 12 बैंक हो गए, फिर सरकार कहती है विंटर सेशन में एक कानून आने वाला था कि हम अपनी ओनरशिप हर बैंक में खत्म कर देंगे, फिर पता चलता है नहीं जी 2 बिकेंगे। तो सरकार एक व्हाइट पेपर इस देश के सामने लाए, व्हाइट पेपर पे वो बताए कि उनकी एक्चुअली बैंक राष्ट्रीयकरण की मंशा क्या है। आप बैंक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसका जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इस पर आपकी मंशा क्या है? दैट्स द फर्स्ट डिमांड। वी वांट अ व्हाइट पेपर एज फार एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज कंसर्न। हमारी दूसरी डिमांड, और ये इस मंच से हमारे नेताओं ने अनेकों बार कहा है, ये जो संस्थाओं को भयभीत करने का, संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। आरबीआई एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल संस्था है, इट इज ऑटोनमस, इट इज इंडिपेंडेंट, लेट इट डू इट्स जॉब। आप आरबीआई के ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आरबीआई को उस रिपोर्ट से किनारा करना पड़ा, उस रिपोर्ट को, अपनी ही रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को डिसोन करना पड़ा? तो संस्थाओं पर दबाव बनाना बंद करिए, ये हमारी दूसरी डिमांड है। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये भी बेच डालो, वो भी बेच डालो, बनाया कुछ नहीं 8 सालों में, 70 सालों का जो हिसाब मांगते थे वो बेच वो ही रहे हैं जो 70 सालों में बना था। तो ये जो बेचे जाओ पार्टी है, थोड़ा ठहरे, थमे और सोचे कि इस रेकलेस प्राइवेटाइजेशन के परिणाम क्या होने वाले हैं, लोगों की नौकरियों पर, लोगों की आय पर, सरकारी संस्थाओं पर इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, सोचे, और उसके बाद उस पर भी एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करें। आई विल very briefly make a statement in English. There's an RBI research unit report that has red flagged reckless privatization of banks, government banks. It says that public sector banks have played a crucial role as far as financial inclusion is concerned, and any big bang approach to privatize them, which this government wants to do, is going to have more harm than good. This is also in response to an NCAR study which says you sell every other bank other than SBI. What is, however, unfortunate is that this report came on the 18th of August. General Secretary Communication, Rajya Sabha MP Shri Jairam Rameshji tweeted about it at 11:07 in the morning on the 19th of August. The BJP, as usual, kept attacking it, but late at night, the RBI was forced to do a U-turn and disown the same report prepared by its own research unit. What prompted the RBI to do so is a big question, and a question that we will consistently raise, because this cannot happen without the government's interference. Why did the Reserve Bank of India be forced to become the reverse Bank of India? From Make in India
The BJP is down to sell in India. But the research report puts out some very interesting facts. 27 banks have now been reduced to 12. It says the role of financial inclusion, priority sector lending, infrastructure lending, taking banking to the far-flung areas of India has been done by the public sector banks. It says public sector banks are far more cost-effective than private sector banks. Their wages are lower, but their output is more. It goes on to talk about infrastructure lending done by public sector banks. It also breaks the myth that private sector banks achieve their priority sector lending target through priority sector lending certificates, which is nothing but a certificate issued at a price of a fee by the public sector banks, even though the loan remains with them. So they skirt the real lending. The real lending never really happens. It talks about the global financial crisis and how our strong public sector banks ring-fenced the economy and the banking sector. It also talks about how market imperfections are actually addressed by public sector banks. It talks about how bank nationalization distorted those market imperfections. It broke the monopoly of a few money lenders, took it to the far-flung areas, took it to lower middle class, the poor, the farmer. I also want to just make a very, very brief point on this whole bogey about taxpayers' money going into public sector banks. The report clearly states public sector banks in recent times have given 4 times the operating profit of the money infused in them. So taxpayers' money is actually getting good return when it's invested in public sector banks. It's the NPAs which are being caused by this government and the write-offs which have resulted in a bigger mess. There are only 3 demands that we have from this platform. The Modi government must lay out a white paper as far as privatization, the reckless privatization of public sector banks is concerned. It must also state that why did RBI have to do a U-turn and disown its own report? This cannot happen without pressure from New Delhi, which is only obsessed with headline management. And last but not the least, it is time for the Modi government to pause, ponder and assess and make a public declaration on what does it aim to achieve through reckless privatization, one sector after the other. That's what you've reduced the Indian economy to. Thank you. Happy to take your questions. RBI इस पे सुओ मोटो पे पहले